Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Now, today we talk about more about constructors. Okay, so if we have, say, for the copy constructor, parametrized constructor, unparameterized constructor, default constructor, how all they're gonna work, and if we try to assign, say, for example, one object to other object, how will it work? Will it call the constructor, or it will be created as such? Let's discuss all these things. Okay. So for that, I have a class. Maybe I call it class, my class. Okay. My M capital CLASS. Remember one thing, if you have a books like title and all, they use standard naming conventions. If you use Balaguru Sami and all that, they put up class names small letters. But we should have a class name as a starting with the capital letters. This is the convention of object-oriented programming. Okay. Now we have in the private part, say for example, a couple of variables, int a comma b. I'm trying to give b some value. So is it allowed to give some value to the b? Okay, if I give it a go, and there should be terminator. Firstly, the error is here. There should be terminator in the class and the ends. Okay. Now, if you see the error, firstly here, okay, forbids the initialization of member b. You cannot initialize the b. Why? Because these are called as instance variables. They're called what? They're called instance variables. Okay. Instance variables means that you need to have an instance of this class. Then and only then they can be, in the memory. Because you're trying to say b is equal to 90, but b is nowhere yet. If we have, say, 10, 20 variables here, they will not be created. They are not even born yet, right? They will be born only when you create an object of this class. When you create what? And to create an object of this class, you have two ways. You can create an object of the class using two ways. You have two ways to create the object of the class. So what are the two ways? First is to call the constructor directly. Okay. And second is implicitly. Second is what? Say, for example, I have some constructor here, and the constructor is a special member method, which is the same name as that of a class, number one. Number second, it has no return type. Okay. You can pass anything to the, you can pass anything to it. Okay. Right. So to a constructor. So for example, I have a constructor called, it has to be my class, right? And if I'm not passing anything to it, it's an unparameterized constructor, and I can use the initialization list to initialize the a and b. So I'm using a and giving some default values, so 10, comma b. We know this way. Always try to do this way. Okay. Then an empty braces. Okay. Then empty braces. And this is the method. We will see later why initialization list is better than initializing it within the body of the method. Okay, we could have done this a is equal to 10 and b is equal to 20 here, na? Okay, and this is same. You say a is equal to 10 or a parenthesis 10. You can use it anywhere in your coding. कहीं पर भी आप कहते हैं ना a is equal to 20. आप a colon 10 function method भी कर सकते हैं. That's one of the same thing, right? लेकिन यहाँ पे syntax ऐसा है कि यहाँ पे parenthesis इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, वरना अगर बीच में मेन में करना चाहते हैं a is equal to 10, आप a colon 10 भी लिख सकते हो. It doesn't matter. It's the same thing. Syntax is same. अच्छा, ये empty brace है. असल में ये जो empty braces है, ये method है, method की body है. इस my class basically हम functions नहीं बोलते, methods बोलते object oriented में. लेकिन C++ में रिवाज है function नहीं बोलने में. ठीक है, वरना असल में object oriented principles में हम जो हमारे methods होते हैं, functions होते हैं ना, उनको methods बोलते हैं. Anyway, so we just carry on with the naming convention method. Method means function, right? Okay. Now here, you could have assigned these things within the brace, these braces, and within the block of this. अब मैंने एक ही line में लिखा ना, असल में ये ऐसे है ना, ये कुछ ऐसे, ठीक है ना? It's a block like this. It's an empty block. You could have done it here also, but we will understand later why this one is important. कुछ हमारे पास होते हैं जैसे constructor methods and functions हमारे पास होते हैं,
उसमें वहीं पे इनिशियलाइज करना लाजमी है. That's important also. We'll see that later on. Okay. Right now, I just put it here. Now this one is a default constructor. If you don't even write this, okay, if you don't even write this, compiler will provide one for you. But if you have created some unparameterized constructor, then default constructor will not be created. The default constructor create नहीं होगा, कंपाइलर नहीं देगा. अगर आपने एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना दिया तो डिफॉल्ट नहीं होगा. यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो कल जाके यहाँ पे, अगर आपके पास ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो माई क्लास का M1 OB1 कुछ, उसमें आप पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो, तो उसको मैचिंग होना चाहिए ना कौन सा, डिफॉल्ट. और डिफॉल्ट आपने पैरामीटर रखा है तो कंपाइलर आपको डिफॉल्ट नहीं देगा. फर्ज कीजिए अगर आपने ये क्लास नहीं बनाया है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, एंड यू आर क्रिएटिंग ए ऑफ टाइप माई क्लास OB1 and I'm not passing anything to it. That means it has to call home the default constructor. It has to call, but you have not created your own default constructor. The compiler will provide a default constructor for you, so you don't need to. You understand? So देखिए अगर मैं इसको रन करूंगा, it shouldn't have any issues. It will run fine. ठीक है ना? Because compiler has provided a default constructor for you. But if you have created your own default constructor, then this OB1 will call it. If I write here in the braces cout, what else? Default constructor called default constructor is called, and you need a terminator also there, right? And this cout statement, you need a terminator here. But don't confuse, huh? There's a block down, right? Now, if I give it a go, this guy, there's some issue. What's the issue? क्या terminator inside it होना चाहिए, cout के पास है terminator है. What's the issue? क्या होना, error क्या बोल रहे हैं, देखेंगे पहले. नहीं, until क्या करेगा मैं, when error within this context क्या था, my class OB1, okay, इसको मैंने कॉल की, मैं ये cout के बाद ही एरर आ गया ना कुछ. कट, एक मिनट कट करेंगे इसको, कहाँ पे एरर है, चल रहा है नहीं, कुछ मसला है ना यहाँ पे. क्या मसला है, मुझे तो मसला कुछ दिख नहीं रहा ना. इसको कुछ पास नहीं किया हमने माई क्लास को OB1. अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो कॉल तो होना चाहिए ना इसको. लेट मी सेव इट फर्स्ट, maybe it's a save issue. File save as, let me save it as somewhere not in a temp but on desktop. there was C program कहीं था ना, C program folder था ना. Let's create a new folder here, call it CPP. Okay, let me call this as cons.cpp. okay, हाँ एक मसला है यहाँ पे, that is the error. What is by default this access private, so it's in a private, it can't be accessed. You have to keep it in a public. You have to keep it in what, that was the issue, you have to keep it in a public. Okay, बाकी तो error कुछ है नहीं इसको. So what's the spelling, whatever, default constructor is called. So you see that I created here my class OB1, okay,
this OB1 actually called the default constructor. This is called implicit call of constructor. I can do explicit call to the constructor. I say my class, okay, OB2 equals to, okay, then I call the constructor my class, okay, and I'm not going to pass anything to it. But the both things are same. If you look at it, default constructor is called, default constructor is called. So these both of these objects call the default constructor, DEFAULT. Does it make sense? Now this one implicitly calls the constructor, and this one explicitly calls the constructor. ये difference है, ठीक है ना? इसने implicitly call किया constructor को, इसने क्या किया? Explicitly call the constructor, right? Does it make sense what I'm saying? So I could have another constructor, for example, here my class, but right now I am sending some values to it. I'm sending some parameters to it. Say I am passing something to it. Say I put up in the int a and int, maybe I give different names, int x and int y. I use the initialization list to put into the a what? X, and into the b y. So this is a is equal to x and b is equal to y, right? Then I may copy this out here and paste it. Yeah, parametrized constructor is called. Now I say not default, but it's a parameterized constructor is called. But will these guys call the parameters constructor? No. So that means I will create another object, my class OB3, and send it some values. So I'm sending values 10 and 30. Now this guy 10 and 30 will do what? Okay. Now this one, first one called the default constructor, and second one called the parameterized constructor. Now this one called the parameterized constructor. 1030. Jackie, go. Does it make sense? Okay. Now we could have another constructor. It's called parameterized constructor with default values. Parameterized constructor with yes, we can do that. Maybe we have another function here. Normal method. Normal method has first return type. Void get data, for example. Get data is a method which will do what? Which will output the. So I say cout backslash n a equals to a, okay, then b equals to b, and maybe and l. The light composition. I need to increase the light. छोड़ेंगे ना, not install हो रहा है ना कुछ. Display brightness, की brightness कम है ना, मुझे दिख ही नहीं रहा पूरा. Change brightness level. Windows 11 चढ़ाया ना, तो इसमें अभी drivers survivors के पंगे हैं. अच्छा brightness, हाँ अब थोड़ा दिख रहा है. ठीक है ना, समझ आ रहा है? ये इसकी ब्राइटनेस है, आप लोगों की नहीं है. आप लोगों की ऐसी है. अब पैरामीटराइजर मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ. यहाँ पे मैंने कॉपी किया था ना, शायद मैं फिलहाल गेट डेटा करा. बट आई वांट टू गेट डेटा. आई कैन से ob1 dot get data, ob1 dot get data, and here I can say ob3 dot get data, ob3 dot get data. Now you can just see
इट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और उस वक्त वैल्यू थे A में 10 B में 20, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड इसमें A में 10 B में 30, तो एक्चुअली हमने 10 10 सेम ही रखा है ना। ओके, इसको यार इधर ले लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट वैल्यू रखूंगा, दैट मींस आई कॉपी दिस आउट, कंट्रोल V, and I am putting int y is equal to, say for example, 90. Okay, now there is a problem in it. When I say 1030, it will be confused because this guy can call both of these. It can call this also, this also. Now there is an ambiguity who to be called. So no, it will not. It was a problem. To show a problem. Why? Because दोनों को कॉल कर सकता है ना, तो ambiguity नहीं होती है कॉल के, मैं क्लियरली पता हूँ किसको कॉल करूँ, ठीक है। This is parameter constructor with default values. With default, ठीक है ना, तो मुझे एक बंद करना पड़ेगा because both of these guys call the same, can call both methods. So parameter constructor with default value is called, right? So जहाँ पे A 10 था, B कितना था 30. I could have done one more here thing. इसको 10 नहीं रखेंगे, इसको कुछ रखेंगे 50 है. I could have created a constructor, say for example my class, I create an object, my class OB4, send it only one value, send it 33 on. It can still call the same constructor because ये 33 जाएगा इस aim x में और y में अपना जाएगा 90. So it's not an issue, we can call it. See, I should also call then what, OB4 dot get data. You get it, Janam? Now see A33, B90. It's again calling the same parameters constructor with default values, even though I supplied only one value. अगर हम तो इसी को कॉल करेगा फिर भी, हाँ ये ओवरराइड होगा, y is 90 चलेगा नहीं, y से वही जाएगा जो आप भेज रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पे 30 भेजा, तो y is 90 नहीं 30 जा रहा है, इस सूरत में x में 33 जा रहा है, y में ऊपर ले रहा है कौन सा 90. So it's called as a parameters constructor with default values, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको भेज रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ये OB4 या OB3 या OB1, मैं इसको भेज रहा हूं यहां से कंस्ट्रक्टर को, सो OB1 OB2 OB3 ये नॉर्मल नहीं जा सकता, ये रेफरेंस जा सकता, क्या जा सकता है। So that means if I am doing like this, I am creating a class, my class, and we know it is this actually short form, writing like this, huh? I could have said my class OB4 is equal to, then constructor name and send 33. It could be two ways, na? Either this way or this way. Either you just say OB2 is equal to my class, then if the params constructor, then you have to send here values, na? Explicitly calling the constructor. Here just implicitly calling the constructor. The shortcut way of writing, right? Now I am saying my class OB5, but I am sending OB4 to it. I'm sending what? The question is, firstly, I need a constructor, matching constructor, because if I say here, it doesn't have a matching constructor for OB5. Okay, it's still working. I don't know why, but it doesn't have a matching constructor, right? So I could say here OB5 dot get data. Okay, save it. How? This is, let us see what's happened here. This is OB4. We sent 33 and default value 90. Then OB4 हमने कॉपी भेजा किसको? 5 को भेजा हमने, ठीक है? And it has done what? A is equal to 33, B is equal to 90. इसने यानी कि OB5 dot get data जो है ना, but there is no constructor being called, as you could see. Is any constructor called? It just copies it.
It is like saying my class OB5 is equal to OB4. It is like there's no constructor called. Is any constructor called? फिर constructor आता ना, ये message आती है ना, ठीक है ना? Now if I have here a constructor, my class okay, and I want to send an object OB4. What is the type of OB4? What's the type OB4? हाँ, type of class. It's type of OB4 का क्या type है? जैसे आपने 30 भेजा, 40 भेजा, वो integer थे ना, उनका डेटा टाइप int था. देखो आपने 10 भेजा, पकड़ा किसमें आपने? int में. तो 10 int था, डेटा टाइप. अब अगर मैं बेच रहा हूँ क्या, अगर मैं भेज रहा हूं इसको, ठीक है ना, OB4 अगर भेज रहा हूं मैं, OB4 डेटा टाइप क्या है? Type of the class. That means I need to have here my class, because the type my class है, जो OB4 है, ये किस टाइप का है? OB4 is of type my class, and I want to copy it into OB, but I can't copy it by value. I have to copy it by, this is by reference. What OB4? It copied into some variable OB, some variable. I sent OB4 to it. Say for example, I'm sending OB4 to it, OB, and it's getting copied into the OB. Now I have initialization list. I have what? Now this OB4, for example, is calling this constructor. If it calls this constructor, this OB4 का reference बन गया OB. So what is OB? OB is the alias of OB4. So whatever OB4 has, the OB has same thing. Will OB5 have same thing? No. OB5 is a different object. Now I need to copy whatever the OB has. OB is pointing to OB4. OB is pointing to whatever the OB4 is pointing to, that is OB pointing to same. So that it's OB4 is A and B. I want to copy that into OB5's A and B. OB, how I do that? I say here A. I say here. Now whose A is this? This is OB5's. Okay. This is OB5's A, not OB4's A. Look here. See here. The OB5, भेज रहा हूं मैं उसको OB4. The constructor, this constructor, for example, this OB4 is the ampersand, means OB4 कहीं भी था, उसमें A में था 30 का 3 और B में 90 की क्या था शायद, वो जितने भी वैल्यूज थे उसमें, ठीक है? ये OB4 के हैं. ये OB4 किसके हैं? If I want to access this A, how I access this? OB4.A. If I am within the class, I am within the OB4, then I can directly call A and B. That belongs to OB4. But if I call it outside, then I'd say OB4.A, OB4.B to access this. Right now, I am within the constructor. Who is calling this constructor? Whose constructor is this? Because I am trying to create which object? Which object I am trying to create? I am trying to create OB5. So who is calling this constructor? OB5. So whose constructor is this? OB5's constructor. So who, if I want to access directly A and B, whose A and B will be? OB5's A and B. Because within the class you can access directly. ठीक है ना? आपने OB5 से या OB2 से या OB1 से क्लास के अंदर आप गए, फिर आप जब उसके अंदर जाओगे आप डायरेक्टली A और B को एक्सेस कर, जैसे आपने OB4.get डेटा किया, तब जब आप OB4 get डेटा के अंदर गए वहां आप डायरेक्ट A और B करते हो. तो जिसका एक क्लास था, यानी कि OB4, जैसे आपने यहाँ पे OB1.get डेटा किया ना, क्या किया?
तो OB1 से बाहर से हम तो गए यूजिंग द रेफरेंस वेरिएबल OB1 डॉट के, यहाँ पे एक गेट डेटा वेरिएबल है, क्लास के अंदर गेट डेटा है ना। अब यहाँ पे जो है बाहर से हम यूजिंग द रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल OB1 को पता है कि ये कहाँ पर है क्लास, मैं कहूंगा OB1 डॉट गेट डेटा। जो ही मैं इस गेट डेटा में गया यूजिंग द OB, नाउ आई कैन डायरेक्टली एक्सेस A and B. I don't need to say inside OB1.a, OB1.b, because I am inside that class using this OB1. So I can directly call the A and B. Right now, when there is a copy constructor, when I am sending OB4 to the object, so using, if I'm outside, this is OB4. Outside, I can access A and B using OB4, OB4.a, OB4.b, right? But if I'm inside this, I can directly access A and B. But this time my class OB5, my class is calling the parameterized constructor, for example, is calling whom? So whose constructor is this? OB5's. So right now I'm in the class using OB5's reference variable. So this is my class and I am using OB5 to access it. So whose object I'm accessing? OB4 के अपने AB में कुछ है, OB3 के अपने AB में कुछ है, इसको अपने AB में कुछ है. So if I am inside the class, I can access this A and B directly. लेकिन किसके A and B होंगे? OB5. मैं चाहता हूँ OB5 के A and B में जाए इसके OB4 के A and B. लेकिन OB4 का अगर मैं यहाँ पे A लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ, वो किसका है? OB5 का. OB4 का. अगर मैं OB4 का लाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बोलना पड़ेगा OB4.a, OB4.b. तो OB4 का A B में डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता विद इन द क्लास जब मैं OB5 से घुसा हूँ क्लास के अंदर. यानी कि ये OB5 के अपना मकान है, अपना क्लास है जिसमें OB5 के बच्चे A and B. तो अगर मैं वहां पे बच्चों का नाम ले रहा हूँ OB5 के बच्चे, लेकिन अगर मैं हमसाया का बच्चा अगर असाइन करना चाहता हूँ तो मुझे हमसाये के पापा का नाम बताना पड़ेगा, उसका रेफरेंस वैल्यू बताना. So that means with that logic, if you understood this thing, so that means if I want to access this A, I'm saying A is equal to, it's AB5 is A, but I'm going to drop home into it, OB4.a. But OB4, is OB4 here visible? No. Should I write OB4 here? No. Why? Not should I? Because this, look here, OB4, you are sending OB4, but you are copying it into home, OB. OB4 is visible only within the, its scope is only within the main. It cannot be accessed there. So if you have to, you can use OB, because OB and OB4 are same. You know? It's an alias. So I have to say OB.a. If I want to drop into OB what? Into the B, whose B is this? And I'm going to draw it OB dot. I'm saying OB dot B. Whose B is this? Then I can say here cout backslash and I am in copy constructor. Copy. I'm in copy constructor. ठीक है ना? If I give it a go, now you see, I'm in a copy constructor. Well, A is to 33, B is to same values. Whatever the A value had, whatever, not necessarily could have put a same value, could have put up different values here also. Just upon margins, क्या तरह A is to B is. और चूंकि इसका copy whose constructor, अच्छी अच्छा temporary value आप मस्त रहा. We want to get the same values there, ना? क्या क्या? अपने वैल्यू मतलब? फिर आपको कॉपी कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, आपको दूसरे कंस्ट्रक्ट करने चाहिए. फिर कॉपी कंस्ट्रक्ट का मतलब है क्लोन बनाना, है ना? उसका मकसद है कि हम उसी के कॉपी करें. अगर आप नहीं करना चाहते फिर कॉपी कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हो? फिर सीधे कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, माई क्लास
OB6. OB, tell me about ये किसको कॉल करेगा? Who will it call? Which constructor will it call? ये डिफॉल्ट करेगा ना, ये ऑब्जेक्ट बनाया ना मैंने, OB6 रेफरेंस वेरिएबल बना रहा हूं मैं of type my class, so it definitely has to call home. It is same as first one, right? So it will call default constructor. That is this guy. Default constructor is. Now I am saying here like this. OB6 is equal to OB5. Huh? OB6 is equal to OB. What do you say about it? And I say OB6 dot get data. Is it an error or is it okay? Look at it. When I say OB6 is equal to OB5, it has called the default constructor. It has called home. And I am saying now OB6 is equal to OB5, assigning OB6 directly to OB5. It is not creating a copy constructor. It's not calling copy constructor. As you could see, a copy constructor call home. It's not copying. It is not calling the copy constructor because it's already created. Constructor is called only when you have to create an object. Object is already created. Both OB6 is created here and OB5 is created here. The constructor will not be called. Rather, it will be copying of one to the other. सीधे कॉपी हो जाएगा, डायरेक्ट कॉपी, जो कि जावा में नहीं होता है, जो बता था ना उस दिन, यहाँ पे C+ में होता है, ये जावा में नहीं होता। ये कॉपी हो जाएगा बराबर इसके वैल्यूज में, ऐसा नहीं होता। यस, नो कंस्ट्रक्टर कॉल, डायरेक्ट कॉपिंग। कॉपिंग को स्पेलिंग है, डायरेक्ट कॉपिंग ऑफ वैल्यूज। ठीक है ना, समझ आ रहा है? सो आपको यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, डायरेक्ट कॉल हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में आएगा आपको, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज कॉपी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर जब आप कॉल कर रहे हो उसमें क्या करें आप, OB5 को भेज दो OB4। अब OB4 जो है वो पकड़ा गया इसमें OB में। अगर आप इस A और B में जो कि OB5 के हैं उनमें आप OB यानी कि OB4 के वैल्यूज नहीं डाल रहे हो तो उसमें कुछ नहीं रहेगा ना, रेफरेंस सेम होगी। ठीक है, पास कर रहे हो खाली इसको, OB4 और OB सेम है, लेकिन OB5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना। जब आपने यहाँ पे OB5 बनाया, यहाँ पे आपने OB5 बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, आपने यहाँ पे OB5 बनाया ना, कहाँ पे, यहाँ पे, तो एक ऑब्जेक्ट बन गया OB5, इसमें अपना A अपना B और गेट डेटा वगैरह वो सारा चीज। लेकिन भेज क्या रहे हो आप, OB4 इसके कंस्ट्रक्टर में गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर किसमें, जो इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, उसमें गया OB4 और वो गया OB में, किसमें गया। लेकिन इतना करने से जो OB4 के AB में वैल्यू है वो इसके AB में वैल्यू में नहीं जाएंगे, जब तक कि आप करोगे नहीं। जिस तरह यहां से हो गया कि OB5 की जितनी भी चीजें थी वो OB6 में चली गई, इक्वल टू से हो गया, जितने भी वेरिएबल्स OB5 के हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स कॉपी होंगे किसमें, OB6 में। यहाँ पे वो नहीं होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी नहीं करता, ये नहीं करता मैं, अगर मैं ये नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल what will be in the A and B of OB5, when I say OB5 will get data, what will be there, it will be junk values, it won't be any, as you could see here, I'm in a copy constructor. Okay, I'm in a copy constructor, right? So OB5 is being created. What is in the A and B of OB5? Junk, garbage value. You understand? So सिर्फ आप copy constructor भेजने से, क्योंकि because you are sending by reference something,
जब OB6 आपने बनाया अलग कप एक, लेकिन भेज रहे हो अब ये, ठीक है, ये भेजे कंस्ट्रक्टर में तो गया, लेकिन इसके कप में ये चाय नहीं गई, ये डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने इज इक्वल करके इसको डाला तो ये गया उसमें, इसका सारी चीजें इसकी सारी चीजों में जाएंगी, ठीक है ना, बात में आ रही है। तो यहाँ पे अब उसमें एक ख्याल रखना पड़ेगा कि दोनों क्लास सेम होनी चाहिए, है ना। अगर इज इक्वल आप कर रहे हो सकता है कि इसके डिफरेंट है, इसके डिफरेंट है, ये अलग, ये माई क्लास नहीं था, ये दूसरा क्लास था, उसका आप दे रहे हो उसमें, तो वो फिर प्रॉब्लम कर सकता है ना, उसमें वो ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम प्राइवेट में डेटा क्यों रखते हैं, ताकि वो सिक्योर रहे, है ना। लेकिन अगर किसी तरीके से आपको इसका रेफरेंस मिल गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब ये क्लास है और ये प्राइवेट पार्ट है इसका, प्राइवेट में जितनी भी चीजें हैं ये एक्सेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सेस होंगी सिर्फ विद इन व्हाट, विद इन द क्लास। लेकिन अगर आप देखोगे कि OB4 जो मेरा था, क्या था, OB4 जो चीजें थी, OB4, है ना। So copy constructor is kind of a leak to the security of the C++, क्योंकि OB4 की जो चीजें थी, प्राइवेट चीज, प्राइवेट क्या है हमारे पास, दो ही है, A और B, उसको मैं एक्सेस कर पाया विद इन द OB5 if I have a reference, if I have a, so that means anybody who can have a reference to your class can access private things in, है ना, can access, is it or not, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट चीज है, आपने कहा मैं प्राइवेट है भाई साहब, मेरे मैं इनको एक्सेस नहीं करने दूंगा, लेकिन अगर आपको कहीं से रेफरेंस वेरिएबल मिलता है, you can leak that, you can what, so there is one method to stop it called constant, okay, you can create a constant things, we see that later on, ये बात समझ आ गई। So with that, this is also called the overloading of constructors, okay, because you have same name, clear all, what is the overloading means, that you have a same name, different functionalities, depending on different signatures. This is also called a polymorphism, also called a runtime polymorphism. The poly means many, morph means shakle. Let's say the Junaid sir in front of student is a teacher, in front of my kids is a father, in front of father is a son, so same Junaid sir is different, okay. This is what polymorphism means, or overloading means you are having the same name method, but it is calling exactly some other method. So this is also called as constructor overloading. Yes, कहाँ पे, हाँ, अच्छा यहाँ पे जो मैंने दिया है कंट्रोल Z करेंगे ना, ओके, यहाँ पे आ गया ना OB.A, OB.B. Let's me copy this and I put it into the Telegram group. समझ आ गया, कंट्रोल V, एकदम smooth. So now one last thing we do that is in a C is, we have no time left, okay, code template, that what is this argc and characteristic argument, okay. So what are these parameters of the name? So argc here means कि आपने कितने arguments भेजे, and this argv of that character is a character array, okay, pointer array which has the arguments in it,
If you do not pass an argument, there is still a one argument, that is the file name. That's what. Say for example, if I want to say for example, I say int I printf, firstly printf this argc equals to %d double quote close comma, maybe backslash n here, comma, okay, and I print this argc. Then I will run a loop because there can be many variables. Right now, if I don't pass anything, there will be only one variable. That's the file name with the path. For I is equal to 0, it is 0, not O. I is less than argc IE plus plus, and when I do it inside is I just printf argv of %d is equal to %s. I just want to print that string, comma, there's I, and next is argv of I. Let's first run it and then I will explain what's going on. Now, how many arguments I have? One argument only. Argc is equal to 1. That means we have only one argument. What is the argument? That is the file name with the path. Let's see user journey document, C free temp untitled 2.exe. Maybe I save it somewhere. File save as desktop पे था ना C program में कुछ CPP कुछ रखा था ना अभी इसमें C program में रखा था ना हमने परसों वो कहाँ गया C इसमें C program command.c था बदनाम because they got command now argument save. Now if you give it a go, you'll see what's the file name. It's a path is there C user journey desktop C program command.exe. This is the, so if I go there using the command prompt cmd, okay, cd desktop. Now on the desktop I have cd C program. So yeah, C program. आ गया ना, वहां पे क्या नाम है फाइल का नाम? Command, command. You can say command because this is exe na, command.exe में चलानी है ना, so you can say command.exe or command. Now you say arg is 1 and the file name is command, right? Now I am saying I'm running this program again. You could say command.exe or command. This is one of the same thing, right? Because command of बोलोगे is an exe executable file. एक ही आर्गुमेंट है, लेकिन अगर अब मैं और आर्गुमेंट दूंगा, जैसे फर्ज में मैं इसको दूंगा जुनैद, ओके, फर्ज में ऐसे MUTAQI मुत्तकी Muhammad Junaid. Now I got one argument, second argument, third argument, and fourth is the file name. The first is the file name, second is muttaki, and what will happen here is the argc will have how many arguments I have, because I have to send these arguments using the command prompt. That's why it's called command line arguments. It's called command because who is calling this main function? It's the operating system. So I have to send these values when I run it. Within the program, I can't do it, no? I have to send it home when running it. I could use recursion also to call it. That's a different story. But main is usually called by the operating system, by the OS. Now I am sending it the file name when I run it. That default goes into the argc will have 1, and this will, the first box will have this file name. But now I'm sending 3 arguments to it. Muttaki, Muhammad, Junaid. So total I will have a 4. So argc will have how many? And arg0 will have command.exe. arg1 will have Muttaki, then and so on. So if I give it a go, now you could see here. So I have, okay, it's actually, we should write argc, not arc. Argument count.
So ये इसने वही लिखा जो हमने यहाँ पे लिखा है, ARC लिखा है ना, इसने वही लिखा है जो अब लिखेंगे. So ARGC is argument count is 4. So 0 में क्या है, काउंट इसमें 1 में क्या है, मतलब कि 2 में क्या है, 3 में क्या है. तो ये इसे बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स. क्योंकि कभी कभार हम मेन को भी कुछ भेजते हैं. अब यहाँ तो मैंने ऐसे ही भेजे नाम, लेकिन कभी कभार हमें कुछ भेजना है जो हमें जरूरत लगेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फाइल नेम भेजो, फिर उसी फाइल पे काम करना है मुझे अंदर. आपने फाइल नेम भेजा है, उस फाइल को अभी फाइल अपने नहीं पड़ी है, वरना इसमें मैं फाइल्स की एग्जांपल देता हूँ अक्सर. ठीक है, तो उसमें हमें फाइल वो फाइल खोलनी है और वो फाइल यूजर देना चाहिए पहली जब हम रन करेंगे फॉर एग्जाम्पल. तो कुछ भी हम भेज सकते हैं. तो जब भी हमें भेजना है तो ये कब कहाँ भेजेंगे हम, कमांड लाइन से, बिकॉज इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम हु कॉल्स द मेन, यानी कि जब ये रन होगा उसी वक्त भेजा जाएगा ना. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट्स. एंड ARGC विल होल्ड काउंट. कितने वेरिएबल्स हैं टोटल, अगर कुछ नहीं भेजा तो कम से कम एक तो होगा ही, वो क्या है, फाइल नेम. तो जितने भी फिर बाद में आर्गुमेंट भेजेंगे तो वो सारे इसमें चले जाएंगे, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज दिस इज द पॉइंटर एरे. इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. कोई लिमिट नहीं है कि जैसे 10 है 12 है कितने. सो इट इज ए इट्स एन एरे, इट्स ए पॉइंटर एरे. तो पॉइंटर एरे में पॉइंटर आपको एड्रेस याद रखना है, आगे चलेगा एक खुद ही. यू अंडरस्टैंड, देयर इज नो लिमिट इन. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. I think I should copy this out, and so that you have this piece of code with you in the Telegram group. Any questions you can ask. Tell others also to continue properly, because दिन ब दिन concept बढ़ते जाएंगे ना. Okay, it's time to stop this.